Hello everyone, how are you all? I hope all of you are good with the grace of God. Sitting at home and learning from home is little difficult. But don't worry, Cambridge International School Daswa is here to help you out at this time of crisis COVID-19 pandemic. Myself Rita from Cambridge International School Daswa, your political science teacher, and today I am going to clear chapter Judiciary, and the topics I would be covering in this video will be structure of judiciary, jurisdiction of Supreme Court. I will cover original, writ, appellate, advisory jurisdiction. So let's start judiciary. I hope you understand the meaning of judiciary, or we are going to recall first. Now, what is judiciary, so that further topics will be clear to you, your content will be easy for you. So let's recap. What is judiciary? Judiciary means judges, Supreme Courts, those who are providing laws and equality to all the people of the country like India. So judiciary's functions: protect rule of law. Rule of law means equality for all. Settles disputes, all the disputes, home disputes like marriage, adoption, succession, then other disputes between the states. All are the functions of duties of Supreme Court and a High Court as well. Judiciary safeguards the rights of individual, means dignity. Check the possibility of despotism ताकि कोई dictator ना हो जाए. So these are the function of judiciary. Now today our topic is structure of judiciary. You are watching on your screen the beautiful chart of full structure of judiciary system of India. You can also observe the same chart from your NCERT book, page number 130. Here first column we have given Supreme Court of India. तो इसका क्या काम है? Its decision are binding for all courts. सारे के सारे कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानेंगे. फर्दर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आगे we can't appeal anywhere. Can transfer judges of high court, ये कर सकती हैं. Can move, Supreme Court can move cases from any court to itself. Supreme Court can transfer cases from high court to one high court to another high court. अब हाई कोर्ट का क्या काम है? हाई कोर्ट क्या कर सकती है? हाई कोर्ट कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट. हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट. रिट मीन्स the official order issued by the court. Can issue writ for restoring fundamental rights. Can deal with cases within the jurisdiction of state. Jurisdiction means, make clear this word, jurisdiction means any official power to make decision. Fine, the official power to make decision. So exercise superintendence and control over the courts below it. इसके नीचे वाली सारी कोर्ट पर हाई कोर्ट का हक है और हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का हक है. नाउ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इट डील्स विद केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो केस होते हैं. कंसिडर अपील्स ऑन डिसीजन गिवन बाय द लोअर कोर्ट. लोअर कोर्ट से, इसके नीचे वाली सबॉर्डिनेट कोर्ट से ये लोग डिसीजन को चेक कर सकते हैं. Considers appeals on decision given by the lower court and decide cases involve serious criminal offences. Offence means crime. Now lower court. Lower court means subordinate court. जो subordinate court, you can say village court, जो इनके district court के अंदर आती है. So it considered the cases of civil and criminal natures like village level cases only. Yes. Now this is a chart. You will take help from this chart when you will write your first question of today's homework. Jurisdiction of Supreme Court. Jurisdiction, I told you, the official power to make decision. अब सुप्रीम कोर्ट की jurisdiction कहाँ कहाँ पर है? Number of points are here and this will be the second question you will write in your copy. हाँ जी, first jurisdiction original. जो original case यहाँ पर आते हैं. It means cases that can be directly considered by the Supreme Court. ये वो वाले केस होते हैं जो कहीं और नहीं जाते, सीधा सुप्रीम कोर्ट में आते हैं. डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट और अमंग द स्टेट देमसेल्व्स. इनके डिसीजन स्टेट नहीं ले सकती है, हाई कोर्ट नहीं ले सकती है. डायरेक्टली these cases considered by the Supreme Court, because the Supreme Court of India is one of the very powerful courts anywhere in the world. It functions within the limitation imposed by the Constitution. The function and the responsibility of Supreme Court are defined by the Constitution, and Supreme Court has specific jurisdiction and scope of power. Now appellate jurisdiction. First, if you want to take help from the flow chart, the same topic you will
get from your page number 131. Now first jurisdiction है सुप्रीम कोर्ट की अपीलिएट jurisdiction. सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील. इसके बाद आप कहीं अपील नहीं कर सकते हो. A person can appeal to the Supreme Court and against the decision of a High Court. You can see the little clip on your screen. CBSE today filed a case in Supreme Court against the Chennai High Court order on providing grace marks in NEET for Tamil medium students. The case will be listed on urgent basis and I will update the listing date later on. This is the dialogue of anywhere else you can say Dr. Amit Gupta. But this is the case filed against filed to direct to this type of case you can say appellate jurisdiction and filed directly to Supreme Court. Now further I am explaining to you like the Supreme Court is the highest court of appeal. A person can appeal to Supreme Court against the decision of High Court. High Court must certify that the case is fit for appeal. अगर हाई कोर्ट कहे कि इसका डिसीजन यही फाइनल है, दिस इज अनदर कंडीशन. ओके, देन इट इज टू से दैट इट इन्वॉल्व्स अ सीरियस मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन मींस ट्रांसलेशन ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कि मैंने कुछ कहा, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कह रहा है, तो इसको लेकर अगर झगड़ा है तो देन देयर विल बी अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन एंड सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड व्हाटएवर द मैटर इज. In addition, in criminal cases, if the lower court has sentenced a person to death, किसी को मौत की सजा हो गई, then an appeal can be made to the High Court or Supreme Court. Of course, Supreme Court holds the powers of decide to whether they admit appeal even when appeal is not allowed by the High Court. So make one thing clear here. Appellate jurisdiction means that the Supreme Court will reconsider the case and legal issue involved in it. If the court thinks that the law or constitution has different meaning, उन्होंने कुछ कहा, इन्होंने कुछ समझा डिफरेंट, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग को, then the Supreme Court will change the ruling and along with also give the interpretation of provision involved. सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई इसको नहीं इंटरप्रेट कर सकता. The High Court too have appellate jurisdiction over the decision given by the courts below them. ऐसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट सुनती है हाई कोर्ट के खिलाफ, हाई कोर्ट सुन सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ क्योंकि वो उससे लोअर कोर्ट है. नाउ रिट ज्यूरिसडिक्शन. सबसे पहले बेटा क्लियर करो रिट का मीनिंग. रिट क्या है? इट इज एन ऑफिशियल ऑर्डर इश्यूड बाय द कोर्ट. इसको रिट बोल देते हैं जिसका झगड़ा चल रहा हो. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन टाइप्स ऑफ रिट: हैबिस कॉर्पस, मैंडेमेंस, प्रोहिबिशन, सेटोरवी, Q warranto, but this is not in our syllabus now. We are not covering in these what types of writs are there. We will clear only writ jurisdiction. वो क्या है? Supreme Court has the power to issue special orders in the form of writs to restore the fundamental right. अब ये क्या है? Listen. As you have know that these 5 types of writs are there. डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर रेमेडी. अगर इस रिट में से किसी का कोई वॉयलेट हुआ तो दे कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट. द सुप्रीम कोर्ट कैन गिव स्पेशल ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ रिट. फिर रिट जारी करेगी सुप्रीम कोर्ट. द हाई कोर्ट कैन ऑल्सो इश्यू रिट्स, बट द पर्सन हुज राइट्स आर वॉयलेटेड हैव द चॉइस ऑफ ईदर अप्रोचिंग टू हाई कोर्ट और अप्रोचिंग टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली. दो सच रिट्स द कोर्ट कैन गिव ऑर्डर्स टू द एग्जीक्यूटिव टू एक्ट और नॉट टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे. तो इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का रोल है. नाउ फर्दर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन. अब जैसे इसका नाम है एडवाइजरी, तो मतलब ये एडवाइस देने के लिए है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक लीगल ओपिनियन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस एंड प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट सच अ चेंज. सलाह दे सकती है लेकिन जरूरी नहीं कि उसकी सलाह मानी जाए. So in addition to original and appellate jurisdiction, the Supreme Court of India possesses advisory jurisdiction also. This means that President of India can refer any matter that is of public importance or which involve interpretation of Constitution to Supreme Court for advice. So what then in the utility of advisory powers in Supreme Court? This must be question in your mind. So further we are checking here which type of conflicts are related to which type of court.
you will solve it, and in my next video we will discuss it. Now, shall we learn, revise and write some of the questions? Achha, before telling you these two questions which you are going to write in your copy, I will tell you one thing here, that after reading all the content, the question must be in your mind that what then is the utility of advisory powers of the Supreme Court? The utility of twofold. In the first place, it allows the government to seek legal opinion on the matter of importance before taking action. This may prevent unnecessary litigations laterly. दूसरी बात यह है कि इन द लाइट ऑफ द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट द गवर्नमेंट कैन मेक सुटेबल चेंजेस इन इट्स एक्शन एंड लेजिस्लेशन. सो अब आप पहला क्वेश्चन लिखोगे, विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल चार्ट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया, एंड प्लीज ड्रॉ दैट चार्ट ऑल्सो. यू विल एक्सप्लेन ऑल द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और उसके सारे वो इश्यूज. सेकेंड क्वेश्चन यू विल राइट व्हाट डू यू मीन बाय ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और इसमें आप सारे के सारे ज्यूरिस्डिक्शन लिखोगे, ओरिजिनल, रिट, अपीलिएट एंड एडवाइजरी. हो सके तो यू कैन मेक इसका चार्ट भी बना सकते हो आप, क्योंकि स्पेशल पावर्स हैं ये. So these two questions plus वो that matching column will be your homework. In my next video, I would be covering another topic from the same chapter. Till then, goodbye and have a wonderful day ahead. In my next video, we will meet with the next topic from the same chapter. Till then, goodbye and don't forget to read the cartoon side by side. Goodbye and have a wonderful day ahead. Stay safe, stay healthy. Thank you.